Second question. Two identical metal balls with similar charges are brought in contact. The charge of one of the ball increased by 40%. Find the ratio of initial charges of the ball. Wait, identical balls है ना? So जब तुमने contact में लाया तो वो Q upon Q upon ऐसा हो गया होगा, right? So yeah, similar charges are brought in contact. Wait, what? Similar charges? What do you mean by that? Oh, it's like दोनों पॉजिटिव है, something like that, right? Okay. So basically ऐसा है कि यहाँ पे x है, यहाँ पे y चार्ज है, फिर उसके बाद में यहाँ पे x plus y upon 2 है, and this is like x plus y upon 2 as well. और बोल रहे हैं कि the charge of one of the balls increased by 40%. So इसमें जो increase हुआ, which is just y minus x upon 2, that is actually 40% of x. So let's just assume कि x is less than y, तो यहाँ पे increase हुआ होगा. And this is equal to 40% of x, which is like 4 upon 10, which is I don't know, it's 0.4x is good enough, I think. So y is equal to x plus 0.6x, which is like 1.6 times x, right? Okay, so we want the ratio of the, right, the actually कैसा होगा that this thing is 1.6 and this thing is 1 somewhere, or like 10 is to 16, or like 5 is to 8. So ratio of the charges is 8 is to 5, which is not here for sure. कुछ गलत हुआ अपना? Like that's 0.8. Oh, it's sorry, it's 1.8. That's the thing. So right, 5 is to 9 at least. So 5 is to 9, which is 8. Next question. 17th. 17th is a balloon whose mass is m is attached to a rope ladder on which a man of mass something is standing. The balloon is stationary. So एक balloon है जिसका mass m है. Okay, it's attached to a ladder. Okay, on which एक दूसरा कोई तो इंसान है of mass m. Okay. The balloon is stationary. The person begins to rise at a constant speed v on the stairs. Right. With respect to stairs or with respect to what? I think with respect to us, right? Okay. The balloon rises with the same speed v. Which mass of so that's a rope ladder on which mass man of mass is standing. Okay. The balloon rises with the speed v, the same speed v. Oh, और क्या बोल रहा है? That m is less than m. Okay, so of course इसकी जो speed रहेगी it descend with something less than v, of course, right? The balloon descends with, and जो ladder है it's massless or what? I think it's massless, right? Well, whatever. So the balloon descends with a speed greater than v. No, the balloon descends with a speed lesser than v. Yes. So D is the answer. Next question. 18th. Because it's not just a balloon, but यहाँ पे ladder का mass नहीं आएगा. In any case, वो बड़ा ही है small m से, so that's what matters. Right. A narrow cylindrical beam of light falls on a spherical air bubble located in a liquid. So that's the axis of the beam. Wait. Spherical bubble located in liquid. You have a narrow beam. So ये surrounding liquid है. A narrow beam, cylindrical beam of light. तो इसको बड़ा कर डालते हैं. A bubble is like spherical. Okay. Cylindrical beam तुमने इस पे गिराई है. Okay, cool. ये इसकी axis होगी probably. So that the axis of the beam passes through the center of the bubble. Okay. And it's a narrow cylindrical beam. So मतलब कि ये paraxial rays है basically. Remind the refractive index of the liquid if it is known that the area of the beam at the exit from the bubble is 4 times the cross section area at the entrance. So right. So like actually क्या होने वाला है that, right? And you want at what? The area of the beam at the exit of the bubble is 4 times the cross sectional area at the entrance. So ये x में ऐसा हो रहा है, right? Yeah. और ये narrow beam है, that's our assumption anyway, right? So like you can use that. Okay, it's like a parallel है, so use this thing. ये जो है we just say with respect to ये जो पहले करेंगे, this is like 2r distance from this thing. Okay, so पहले जो अपनी virtual object it has infinite, right? So इतना u infinity है, so mu2 minus mu1. इसका refractive index अपन फिर करना क्या है? Okay, इसका n बोलो, इसका 1 बोलो, right? So इसका refractive index like 1 upon ये जहाँ पे भी गया, which is, well I just say it's, oh okay, so जहाँ पे ये गया, so ये जो distance रहेगा, let's just say वो distance x है, so 1 upon negative x, that actually determines कि ये कितना बड़ा होने वाला है, right? Because yeah, that is the thing actually, that
डिटरमाइंस की ये लेंथ कितनी होगी एंड दैट मीन्स राइट। जब ये 4 टाइम्स ऐसा बोल रहा है इसका एक्चुअली मतलब क्या है that 2r plus x is like 4 times of x, so 3x is equal to 2r, right? That's our equation 2r, so this is just equal to 3 times of x, right? Then it will be like 9. The kya the area of the beam is 4 times, not the radius, so which means ki ye double ho jayega. So like fine, just r is equal to x basically, right? Okay, radius दिया आपने को, कुछ भी नहीं दिया इस पे, just know that okay. Determine the refractive index of the liquid, right? Okay. It is known that the area of the beam at the exit of the bubble is 4 times the cross-sectional area at the entrance. X equal to R. We just have to do it. So like यहाँ पे क्या होगा, negative R and then minus mu1 upon R, right? So mu1 कितना n upon R, sorry mu1 upon यहाँ पे infinity आ जाएगा ना, सिर्फ वो तो गया है इधर, वो just मर गया. Okay, तो ये तो नहीं है. This is equal to what? Mu2 minus mu1 upon R. In this case, for positive है. Okay, cool. So ये क्या है? Like 1 minus n upon it's a positive R, right? Well, yeah. Which means कि 1 minus n equal to negative 1. So n is equal to 2, right? That's what effect. So C is the answer. Next question, 19th. 19 is different particles are projected horizontally in the same plane with different speeds from the same point. Okay. Horizontal project किया है. Okay. The point position is taken as origin. Determine the locus of points in space where the velocities are the same in magnitude. Locus of points. Wait, what? Particles projected in the same plane with different speeds from the same point. Okay. The point projection is taken as origin. Cool. Determine the locus of points in space where their velocities are same in magnitude. What do you mean by that? Points in space. I think दो particles है, right? Okay, so दो particles, उनकी जो speed है वो different है. Okay, cool. Same points से project किया है, fine. The points of projection is taken as origin. The locus of points in space where the velocities are same in magnitude, but वो same direction में थोड़ी ना, different speeds. Okay. Velocities are seen in magnitude. I don't understand तुम क्या बोल रहे हो. The locus of points in space, but ऐसा कोई point होगा नहीं जहाँ पे दोनों एक साथ रहेगी. That doesn't actually make sense, right? Because the same plane with different speeds from the same point. Oh, okay, समझा. Like different particles यानी कि बहुत सारे particles. Right. समझा. Understood. So सब में like the friction is the same everywhere और की जो speeds है वो अलग अलग है, right? Okay, the speed varies and अच्छा हाँ, so locus of the points in space where the velocities are same in magnitude. थोड़ा अजीब है ये. सबकी velocity सेम हो जाए. That's weird. सबकी कैसे सेम हो सकती है? Okay. वहाँ पे जाते हुए zero part. Well, no, this doesn't actually make sense because different speeds बोल रहे हो तुम लोग तो. How does this actually make sense? I don't think it's correct. On the same plane with different speeds from the same point. बहुत सारे particles project किए most likely. The point projection is taken as origin. Suppose हमारी random speed v है and then there is a point की जहाँ पे तुम्हारी speed एक certain speed ही हो सकती है. ऐसा कोई point है क्या? नहीं. Speed change कर दो तुम्हारा. Right? Because look, friction जो है, it's like yeah, just mu g. That's the acceleration all the time. तो क्योंकि वैसा रहने वाला है, it means कि this cannot be the thing, right? Velocity is the same magnitude. I don't know. ऐसा कौन सा point? I don't know. Just move on. Weird. 20. मुझे question का मतलब नहीं समझ पहली बात तो. An enclosed 1 mole of an monatomic gas is taken through a process A to B as shown in the figure.
Okay, A to B, right. 1 moles n equal to 1 है enclosed monatomic gas. So monatomic gas is like तुम्हारा जो degrees of freedom है just equal to 3 basically. Okay, CV क्या है 3/2 जो भी ओपन कर लेंगे. Taken to the process A to B as shown in the figure, the molar heat capacity of the gas for this process is. So P, oh, it's like what? P upon V is constant. PV, P power negative 1 is a constant in this case, right? So whenever PV, right? So like R upon gamma minus 1, which is like CV basically, isn't that right? So CV, yeah, because whenever like X is just 1, this kind of, that was the thing, right? Yeah. Wait a second. Am I sure यही था कि कुछ और था? It was like R upon gamma minus 1. Gamma minus 1 is like you have a CV. That's like, okay, वहाँ पे R आ गया ऊपर CV. Yeah, that's the thing. So CV upon, sorry, CV minus R upon X minus 1. यहाँ पे X just negative 1 has negative 1. CV plus R upon 2 in this case, right? Which is like 3 upon 2 plus 1 upon 2R. So just 2R. 2R is the heat capacity. So B is the answer. Next question. That's not molar heat capacity. Whatever. Next. 21. 21 is in the LC circuit shown in the figure. The current is in the direction shown in the figure and change what charges are on the capacitor plates having sign. Okay, at this time, okay, I is increasing as well as Q increasing. जो भी है. So write down the equation. क्या होगा ये? Like LDI upon DT इतना voltage drop होने वाला है. That's equal to the voltage का increase जो हुआ, which is Q upon C of course, right? Well, yeah. So यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है वोल्टेज का एंड दैट मीन्स कि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, राइट? बिकॉज यस, वेट व्हाट टी आई अपॉन टी टी इज, एम आई श्योर दैट्स अ थिंग? टी आई अपॉन डी टी इज आई रियली इंक्रीजिंग? ये एक्चुअली कर क्या रहा है? लाइक करंट इज ट्राइंग टू डिस्चार्ज दिस कैपेसिटर. सो ये कैपेसिटर ट्राई कर रहा है करंट प्रोड्यूस करेगा, ऐसा बोल सकते हैं ना, राइट? which means that yes, इंडक्टर में करंट इंक्रीज होना चाहिए. so that is actually happens. So, जितना इंक्रीज हो रहा है उसके हिसाब से तुम्हारा वोल्टेज ड्रॉप है, बिकॉज लाइक एक स्टार्टिंग वोल्टेज यहाँ पे आ रहा होगा, या इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, डिक्रीज करने की कोशिश करेगा बेसिकली, मतलब ये वोल्टेज उल्टा जाएगा. ओके, सो आई इज इंक्रीजिंग but Q is decreasing. Yes, that's the thing. So I is okay. So C is the answer. Next question. 22. A uniform rod of mass m released from horizontal position as shown in the figure. The rod is free to. That was the thing, right? कि कुछ और होता है. I is increasing and Q is. It's like what? Wait. Yeah, well, wait a second. So जब हम इसको differentiate it's like L T squared I upon dt squared is equal to. So dt upon dt is actually negative I, right? That's why यहाँ पे SHM होता है. Okay, cool. 22. A uniform rod of mass m released from horizontal position as shown in figure. The rod is free to rotate about the horizontal frictionless axis passing through hinge P. The reaction from the hinge just after the release will be. So, right, ये नीचे गिर रहा है whatever. इससे जो भी force लग रहा होगा. Okay, we just have to figure out इस पे कौन से forces लग रहे हैं. First of all, we'll actually have to figure out कि इसका acceleration क्या है, right? So that's just going to be this thing, mg L upon 2 upon, so that's our torque upon the inertia, what p, which is like ml squared upon 3, and that times L upon 2. That's our acceleration for the center of mass, right? Oh yeah, because that's what we're saying, sure. मतलब क्या होगा, L squared तो गया हर जगह से, ये upon 2 भी चला गया, नहीं, ये times है ना, okay, good. M गया, just get g upon 4 upon 1 upon 3, like for 3 गया, just 3g upon 4 is the acceleration downward, right? इस पे m, so yeah, um, like what, जो भी force लग रहा होगा, that's downward over there, और फिर ये एक्चुअली g से एक्सलेट होना चाहिए था, बट यहाँ पे 3g अपॉन 4 देखिए ऊपर g upon 4 times m, so mg upon 4 upwards, right? So C is the answer. Next question. 23. There are three liquids A, B, C. The mass, heat capacity, and temperature for the liquid A is MaCATA. For liquid B is this thing, and for liquid C is right. ठीक है. If all the liquids are mixed, then the final temperature will be. Okay, cool. हाँ ठीक है ना, तो
टेम्परेचर सेम होगा ऐसे थिंग, राइट? जो जीरो से तुम गिनो, जीरो से तुम्हारा कितनी एनर्जी रहेगी, राइट? सो सारे जब जीरो टेम्परेचर रहता है तब से तुम टेम्परेचर इंक्रीज करो, तुम्हारी एनर्जी क्या आएगी? MaCA right? So like summation of MaCA, that's equal to what? Summation of MaCA times temperature T, right? Yeah. So I think B is correct because देखो इसमें, और ये क्या है, ये तो सही नहीं लग रहा. Wait, and क्या है? The heat capacity, not the specific heat capacity, हाँ? Wait, तो तुम बोल रहे हो कि ये heat capacity है, not the specific heat capacity. That's what you're saying? Is that the thing? ठीक है, फिर M की जरूरत नहीं, just CATAC. Okay, fine. And upon CA plus, right? So A is the answer in that case. Next question. I thought specific heat capacity here, but then whatever. 24. A uniform circular disk of radius r is in pure rolling motion with zero angular acceleration as shown in the figure. What is the instantaneous radius of curvature of trajectory at point P? So point P, okay, pure rolling motion with zero angular acceleration. What? Oh, it's fine, understood. Right. What is the radius of curvature of trajectory of point P? So, right, it's like in that direction. Then such a velocity is like, so this is v in this direction and also v in this direction because of course, right? तो इसका एक्चुअली कैसा है? v is in this direction, like sort of 2v. और इसका जो acceleration है that's in this direction is just कितना? It's v square upon r of course, right? Yeah. तो अपने करना कैसे? हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर अपने कैसे ढूंढना पड़ेगा, लाइक इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लाइक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन समथिंग. या दैट्स द थिंग. सो जस्ट sort of 2v का स्क्वायर upon यहाँ पे just v square upon r and then 1 upon sort of 2, right? That's the direction. Yes, so just 2v square upon v square upon sort of 2r, which means 2 square root 2 of r. That's the thing. So B is the answer. Next question. 25. 25 is a ball moving with velocity I hat collides with stationary ball and returns with velocity j hat upon 2. The equation of restitution for this collision is, okay, stationary ball and returns with velocity j hat upon 2 for some reason, but that doesn't actually make sense. एक ऊपर से जा रहा है, हाँ? Oh, okay, understood. So like actually ऐसा नहीं है कि वो जो wall है, it's like this. Understood. The equation of restitution for this collision, elastically तो बोला नहीं कुछ ऐसे, मतलब, right? Some kind of vector ऐसा होगा that it's right. It's getting complicated, isn't it? Doesn't it actually depend कि वो कैसा है, right? तुम्हें सिर्फ वेलोसिटीज दिया गया एंड यू ऑल्सो नो कि ये परपेंडिकुलर है, लाइक पहले 1 था फिर यहाँ पे 1/2 आ गया. ओके, तो जो हमारा मोमेंटम चेंज हुआ, दैट्स बेसिकली इससे जो ये प्लेन जो रहेगा उसे नॉर्मल वेक्टर रहेगा, यू आर एडिंग दैट अप, राइट? इसमें जो चेंज इन मोमेंटम इज लाइक दिस थिंग, इट्स इन दिस डायरेक्शन बेसिकली, -2 1. सो इन द एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन ये क्या हो जाएगा, जस्ट -2 1. तो तुम्हारा नॉर्मल वेक्टर इसमें ऐसा है. Isn't that just weird? I mean, okay. Just -1, of course. Oh shit, it's -2 comma +1. So मैं क्या करूँ? It's like this. Yeah, as I said, it's just ऐसा plane होने वाला है, right? Okay. So -2 comma 1. That's the thing. Right? I mean, that's gonna be the thing, of course. So ये अपना vector in that direction. So then इसका along that vector कितना था actually में? हमारा जो वेक्टर था 1,0. So along that vector, it was just -2 upon square root of इसका कितना है 5, right? Square root of 5. So initially ये तुम्हारी velocity थी, the normal velocity I guess along n hat, and अब क्या है? अब है like इसका डॉट लोगे तो just 1/2 upon square root of 5, like okay cool. तुम्हारा जो constant restitution is just 1/4 in that case. So C is the answer. Next question. 26. Okay, a particle of mass m is acted upon by this force. Initially, the particle at rest and the origin. Then, the force दिया है. Initially, particle rest पर है at origin. Okay, cool. Its system will be simple harmonic, like t square plus kx. T क्या है? It's like time. Oh, understood.
Simple harmonic doesn't look like that though. Okay, its velocity will be simple harmonic. Its acceleration will be in simple harmonic. Uh, Acceleration. Oh yeah. Okay. Wait. So like basically, ऐसा बोल रहे हैं कि acceleration is of this form. Acceleration is like I don't know upon m. Just say 1/m is like capital I know. अजीब है. Just say 1/m is equal to lambda. So like lambda t squared minus k lambda x. Right. That's this thing. Right. So it's basically like it's like x double dot plus k lambda x is equal to lambda. अपन ने पहले देखा हो ना या इसमें फॉर सम रीजन यहाँ पे कुछ भी नहीं है वेरी वियर्ड जब ये जीरो होता था डायरेक्शन में मेड सेंस बट यहाँ पे नहीं वेट फिर ऐसे ओ गॉड कॉम्प्लेक्स नंबर्स वगैरह में आने वाला है दिस इज नॉट गोइंग गुड ठीक है सो लाइक अल्फा बीटा आर टू नंबर्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो एंड अल्फा बीटा इक्वल टू के लैम्डा देन our x is of this form is just e power alpha t and then you got integration of e power negative alpha t times e sub right that is the thing right yeah so e power negative alpha t times lambda t square so वो lambda तो बाहर जाएगा just that तो lambda बाहर आ गया it's just e power alpha t of integration upon alpha minus beta भी आने वाला है it's just a lot of complicated stuff so integration of t square e power and then with respect to t of course t square e power negative alpha t dt you want to integrate that आई नो उसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं बट वो बहुत लंबा होने वाला है मेन चीज क्या है कि इसमें प्लस एक कांस्टेंट आएगा करना ही पड़ेगा ना और उधर का तो है नहीं ऐसा मैंने बीटा इज लाइक अ कॉम्प्लेक्स नंबर एज वेल तो सब कुछ अजीब हो रहा है यहाँ पे बस बेसिकली विल हैव टू डू इट देयर इज नो अदर वे सो बेसिकली क्या है अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के लैम्डा टाइम्स आयोटा एंड बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के लैम्डा टाइम्स आयोटा सॉरी इसमें नेगेटिव आ गया so beta is equal to negative of this thing जो भी है right first of all we just have to integrate this thing t square e power negative alpha t and then dt right yeah how do we do that so we just have to okay you know what replace the beta for now so it's like what इसको अपन integrate करें it's like e power beta t okay di setup करना पड़ेगा di t square e power beta t so differentiate this is 2t e power beta t upon b upon beta sorry e power beta t upon beta square यहाँ पे आ जाएगा just 2 and then like 0 जो भी है so and then like e power beta t upon beta cube then just put plus minus plus minus plus minus okay cool so पहले ये चीज just you know e power beta t common ले लो in fact it upon beta भी common ले लो in fact what do you get just t square right then minus 2t और यहाँ पे upon beta रहेगा just minus 2t upon beta okay not going good फिर ये चीज so plus 2 times भी से लगेगी like plus 2 upon beta square not good at all and then हाँ वो 0 हो जाएगा this will be the thing right and similarly इसका ही okay and you want this times of e power alpha t in the end okay also like this plus actually a constant right okay and that say c1 something like that and this times of e power alpha t but then alpha and beta हाँ वो cancel हो जाएगा it's just basically this thing right and c1 might be a complex number who knows और फिर अल्फा के लिए रहेगा लाइक सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तुम तो इट्स लाइक वो 2 times of this thing basically right yes so basically हो क्या रहा है 2 times 2 upon beta or I should probably just say negative 2 upon alpha I don't know t squared फिर plus 2t upon alpha and then plus 2 upon alpha squared और जो c1 वगैरह का है वो क्या हो रहा है जस्ट plus c1 upon beta तो minus c1 जो ये c1 plus c2 upon beta और like तुम बोल सकते हो नेगेटिव c1 plus c2 जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर है सो बेसिकली क्या ओह गॉड दिस इज वेरी ओह ओके ये सारा इंटीग्रेशन हुआ शिट ओके ये c1 यहाँ पे नहीं चाहिए था ये सब होगा फिर प्लस अ कांस्टेंट टाइम्स ई पावर ओके 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 समझ रहा हूँ मैं सो प्लस c1 ई पावर नेगेटिव अल्फा टी then subtract करो फर्क नहीं पड़ता like c2 e power negative beta t that will be the thing इसको रिप्लेस करना नहीं अल्फा टी एंड बीटा टी से इनफैक्ट
So e power alpha t and e power beta t, because who cares, upon alpha minus beta जो भी है, right? This is the thing. God, worse, just worst. So alpha minus beta is like 2 alpha in that case, right? Okay. और यहाँ पे just negative alpha कर दो, in fact, because right. So clearly अगर अपने को real numbers चाहिए, and we know that x has to be a real number of course, then इसका एक मतलब हुआ that ये जो चीज है it should die, right? Or it should give like a complex, yeah, it should give an imaginary number or something like that, right? But yeah, तो क्या हो रहा है एक्चुअली में, just 2 तो मर रहा है, just negative 1 upon alpha square, but then alpha square is, oh also ये चीज, इसका अपन क्या करेगा आखिर? Oh god, oh god, no 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 no, oh I know गलत क्या हुआ इसमें। तो जो सारे यहाँ पे अंदर की इवन फंक्शंस थे, हाँ राइट, वो सेम रहे होंगे, बट देन लाइक नेगेटिव 2t अपॉन बीटा स्क्वायर, राइट, ओके, वो मर गया, वो अपने आप मर गया, ऑफ कोर्स, ओके, दैट एक्सप्लेन्स इट। सो ये क्या हो जाएगा, जस्ट नेगेटिव 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर गॉट लाइक टी स्क्वायर प्लस 2 अपॉन अल्फा स्क्वायर, एंड देन ये जो भी चीज है, सो इसमें ये एक्स्ट्रा टी स्क्वायर का फैक्टर आ रहा है, विच मीन्स दैट इन द एंड द बेस लाइन इज कि नहीं, ये सिंपल हार्मोनिक नहीं है, और एक्स इज नॉट ऑफ सिंपल हार्मोनिक काइंड, बट ये जो चीज है, वी नो लाइक दिस इज अ सिंपल हार्मोनिक थिंग, राइट, ये जो पूरा यहाँ पे आने वाला है, बट वी डू नो कि ओके, इसको जस्ट नेगेटिव कर दो, लाइक C1 को 1 बोलो, C2 को नेगेटिव, यू नो द थिंग, राइट? या द थिंग इज कि ये x although सिंपल हार्मोनिक नहीं है, बट देन द एक्सेलरेशन इटसेल्फ इट इज ऑफ दिस सिंपल हार्मोनिक फॉर्म, राइट? या एक्सेलरेशन इज सिंपल हार्मोनिक, इसको तुम डबल डिफरेंशिएट करो, यू कैन सी दैट। Okay, so the acceleration is simple harmonic, velocity not in simple harmonic. अभी अगर देखा, इसको तुम सिंगल डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ पे तुम्हारा 2d रह जाएगा, दैट्स नॉट गुड। और क्या डिस्प्लेसमेंट विल बी इन सिंपल हार्मोनिक, यस, सो सॉरी नहीं, एक्सेलेरेशन, राइट? सो सी इज द आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी लंबा टाइम लगा ना करने को, 27। आई थिंक आई शुड जस्ट हैव डिफरेंशिएटेड दैट, बट चलो ठीक है ना, एग्जैक्ट सॉल्यूशन अच्छा बेटर रहते हैं। 27, okay, an ideal gas and fluid was a process governed by this law, Tv power 2 equal to C, where C is a constant. The variation of velocity versus sound in the gas versus what? Versus volume will be represented by the curve. Variation of velocity of sound in the gas versus volume. अच्छा ठीक है. So velocity of sound is like sort of bulk modulus upon the density. In this case, like sort of the bulk modulus कितना होता है, just well, bulk modulus होता कितना है ऐसे? Just dp upon dv upon p, like it's just v dp upon dv, right? So right, or negative of that, or whatever. So square root of v dp upon dv का magnitude, and then upon rho चाहिए इसमें, rho is like क्या, molar mass times the concentration. So it's like molar volume, it's like v upon n times the molar mass, basically v upon m. That was pretty obvious. Okay, so like v squared upon the mass of the gas. Mass of the gas is like I think constant, तो इसको तुम भूल जाओ, basically all we have to worry about is like volume times the square root of mod of dp upon dv, right? Yes. इसका मतलब क्या है, like tv की power 2 equal to c, t is proportional to p times v, like pv power 3 is some kind of constant basically for the gas. So what does that mean, like dp upon p plus 3 dv upon v is equal to 0. So you know, like dp upon dv, that okay, इसका magnitude is equal to what, is just 3p upon v, तो उसको यहाँ पे पुट कर दो, and also we don't want p really, so like p पर nrt यूज करो, इसमें nrt upon v पुट कर दो, इसमें just 3 nrt upon v squared in this case, right? So yeah, so it's like what, square root of temperature इसमें आ रहा है, बस उतना ही है और कुछ नहीं है. So yeah, as volume changes, it does not actually change in fact. Wait, what? That was pretty unexpected. It's pretty difficult to use. ये कैसे हो गया यार? p power 3 equal to constant, and
टेम्परेचर के बारे में ओ टेम्परेचर तो चेंज, टेम्परेचर भी तो चेंज हो रहा है यार, ऑफ कोर्स इट चेंजेस विद v in fact. So sort of t are, and sort of t is also a function of v in that case, so for sure you can say that. Okay, and like sort of t से proportional है अपना speed, and then t itself is proportional to 1 upon v squared or something like that. Okay, this is not what we should be doing. Instead p को c upon v cube put करो. This is proportional to 1 upon v power 4. So it's like v upon v squared. 1 upon v is proportional. It's like hyperbola or something. So D is the answer. Next question. 28. It is an observer O at an accelerated trolley observes a projectile Q of mass 5 kg. So mass is 5 kg of the projectile. Moving under the uniform gravitational field of Earth acting towards the negative z-axis. So the gravitation. So just look at it's just negative what? Okay, right? Let's say g equal to 10, like negative 10 k hat. Okay, he observes the momentum p hat of the projectile q as this thing. So momentum. Okay, cool. Momentum vector is given by what? 15 comma negative. Oh god, t s my q. Why are you doing this to me? First of all, it's 5 common निकालो, you get like 5 3t negative 2t square and negative 10t. Yeah, that's the thing. Okay, so according to him, this is happening. Momentum is given by this thing. Where t denotes the time in seconds. Okay, find the acceleration of this trolley at t equal to 2 seconds. Wait, वो ऐसा ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्वर ट्रॉली में है, प्रोजेक्टाइल का ओके, सो लाइक दैट्स मोमेंट ओ ओके, इसलिए हमें 5 आया. वेलोसिटी वेक्टर ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल अकॉर्डिंग टू दिस गाय ओ इज लाइक दिस, और वो एक ट्रॉली में है एंड राइट. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली. राइट राइट अंडरस्टूड. सो खुद ट्रॉली की जो वेलोसिटी होगी, व्हाट्स दैट मीन? दिस इज जस्ट द ट्रॉली की वेलोसिटी प्लस जी थिंग, राइट? वेट नहीं, नॉट जस्ट जी थिंग. स्टार्ट करेगा टी ऑफ कोर्स. सो एक काम को उसको डिफरेंशिएट कर डालो. सो द एक्सेलरेशन एज सीन बाय दैट गाय इज लाइक व्हाट? जस्ट 3 negative 4t comma negative 10, राइट? उसने जो देखा वो ऐसा है, बट देन राइट, एक्चुअल एक्सेलरेशन कितना है? जस्ट this is equal to the actual acceleration and then wait, मैं क्या कर रहा था? Of course it's equal to, ये चीज क्या है? It's equal to the actual acceleration which is negative 10 k hat minus उसका actual जो acceleration रहा होगा, which is like right ट्रॉली का acceleration. So ट्रॉली का acceleration क्या है? Just 0 1 negative 10 minus of 3 negative 4t and negative 10, which is negative 3 comma 4t. That's the acceleration, right? Find the acceleration of the trolley at t equal to 2 seconds is negative 3 comma 6, right? So negative 3 I hat, negative 3 comma 8 plus 8 j hat, right? Which is pt. Next question. 29. 29 is a body starts moving on the axis from rest from x equal to negative 2. Acceleration of the particle versus okay varies according to this equation. So acceleration is given. X equal to negative 2 से start कर रहा है. Okay. So at t equal to 0, x is equal to negative 2, whatever. Acceleration is this thing, negative pi radians per second square. Okay, that is like x vector for, oh god, and acceleration is 5 pi signum. Oh god. Okay, that's like x hat for t, right? Where x ठीक है ना, करने का आपको. Position of the particle at x equal to pi upon 2 meters is what? Oh sorry, velocity of particle x equal to, okay, understood. So pi upon 2 meters. So पहले हाफ सेकंड में क्या हो रहा होगा एग्जैक्टली अपने को देखना पड़ेगा, राइट? पहले हाफ सेकंड में just have an acceleration vector this thing. Okay, cool. So this is like x vector is equal to, oh, and it's starting from what? It's like negative 2 से start हो रहा है. So जो भी है, right? X vector is something like
एम्पलीट्यूड वी डोंट नो एक्चुअल में, जो भी है, एम्पलीट्यूड एंड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई. Omega is just pi in this case, it's like pi t plus, very weird. Okay, so pi in a sense, that's why this thing plus phi, right? And ये रेस्ट पर है इनिशियली, तो लाइक इसका जो कोसाइन वो चीज है इक्वल टू जीरो बेसिकली, राइट? यस. सो पाई टी प्लस phi is of like what? Okay, then it's the amplitude. वो एक्सट्रीमम पर है, समझ रहा आपने? एक्सपेक्टेड इज जस्ट व्हाट, it's like a negative 2, जो बेसिक 2 sin of pi t minus pi upon 2, I think. Yeah. So at t equal to 1 upon 2, 0, मतलब कि वो वापस ओरिजिन पे आ चुका है अब. अंडरस्टूड. सब वो ओरिजिन पर है, और उसके बाद में क्या हो रहा है? फॉर t greater than 1 upon 2, it's this thing. So we'll just say t dash is equal to t minus 1 upon 2, जो भी है. एक काम कर, तो भूल ही जाओ कि कुछ हुआ था, और अब से तुम स्टार्ट करो t को गिनना. तो क्या है? एक्सेलरेशन इक्वल टू दिस थिंग, x equal to 0 initially. Acceleration is just 5 pi in the x hat direction. But x hat तो अभी पता ही नहीं अपने को. Yeah. And how am I supposed to do this thing? किस डायरेक्शन में डालूंगा मैं इसको? Whatever. Who cares? Well, velocity तो initially 0 नहीं है. That's important, right? Okay, क्या था वैसे? It was this thing. This was our x vector. So अब वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, क्योंकि वो वहां पे आके ऐसे रुक तो नहीं जाएगा. वेलोसिटी वेक्टर इज लाइक दिस थिंग, 2 पाई कोसाइन ओमेगा टी माइनस जो भी है वो सारी चीज. तो जैसे यहाँ पे जीरो आने वाला है इन केस, या लाइक वेलोसिटी जस्ट 2 पाई. हाँ, तो एक्सेलरेशन ऑल्दो अभी पता नहीं है, बट जस्ट नेक्स्ट पॉइंट पे वो रहेगा. एक्स हैट इज जस्ट इन द वी हैट डायरेक्शन इन दैट केस. ओके, कूल. सो इट्स 2 पाई अलोंग व्हाट वेक्टर? अरे यार, तो कुछ दिया ही नहीं इसमें, राइट? कुछ दिया ही नहीं, जो भी है फर्क क्या पड़ता है. v इज 2 पाई, x इज 0, x से मूव कर रहा है, फाइन वॉट एवर. x इज 0 बेसिकली, या ओके. और उसके बाद में क्या? एक्सेलरेशन इज व्हाट? 5 पाई. ओके, कूल. सो यू वांट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू दिस थिंग. I just use v square minus u square. It's like v square minus 4 pi square is equal to 2as. So 2 times क्या है अपना, x equal to pi upon 2, and that times of s is, एक्सेलरेशन इसका 5 pi है throughout, right? This is the thing. मतलब कि 5 pi square, like v square equal to 9 pi square, so 3 pi. तो b is the answer. Next question. 30. 30 is an infinite collection of current carrying infinite conductors, each carrying a current of I outward perpendicular to papers, are placed at x equal to alpha, negative 2 alpha, 3 alpha, so on. Okay. Current I outwards perpendicular to the paper. So, okay, समझा. Outwards is like, okay. At infinite, okay, on the x-axis. हाँ. Another x-axis कहाँ पर है? It's perpendicular to our plane of paper, it seems. ठीक है. Another infinite collection of current carrying conductors, each carrying होगा inwards. Okay. सब ये I inward है. बड़ा अजीब नहीं हो रहा थोड़ा सा? एक वेट, व्हाट? Oh, okay. Axis is like, I think axis पेपर पर ही है. Okay, cool. So this is the axis. यहाँ पे x equal to 0 है. x equal to अल्फा नॉट पे तुमने एक कंडक्टर को रखा है जो कि करंट को बाहर ले जा रहा है. So it's like I k hat is I hat, I know, अजीब लग रहा है, whatever. Okay. Okay, I inverse. So यहाँ पे जस्ट क्या है? नेगेटिव अल्फा, फिर राइट. So यहाँ पे चीजें थी, बस उनका अपोजिट हो रहा है. अंडरस्टूड? Okay. Then the magnetic field at the origin due to the above collection of the current carrying conductors is understood. So 2 alpha पे, okay, 2 alpha पे like यहाँ पे प्लस आए हैं, यहाँ पे नेगेटिव आया रहेगा नेक्स्ट. फिर 3 अल्फा पे प्लस आया रहेगा, फिर अगला नेगेटिव आया रहेगा, राइट? सो ऑन. एंड देन नेगेटिव अल्फा पे क्या आ रहा है? जस्ट नेगेटिव आए है, राइट? एंड जस्ट कीप्स ऑन गोइंग, ऑफ कोर्स, राइट. और फिर 2 अल्फा पे, सॉरी, नेगेटिव अल्फा पे पॉजिटिव आए. समझ रहा हूँ मैं, राइट?
then the magnetic field at the origin due to the above collection of current carrying conductors is. So at the origin, it's like this thing. Oh yeah, it's just upon R आने वाला है. It's just what was the thing? Of course, it's just क्या था 2 pi R. 2 pi R B is equal to mu naught times the current enclosed, right? So our B is like mu naught upon 2 pi times I upon R. So mu naught upon 2 pi I को कुछ बोलते हैं, and then 1 upon R, right? So just say mu naught I upon 2 pi alpha naught is equal to A. So B क्या हो जाएगा A upon R because of okay, R is like n alpha जो कि इस तरह A upon n. स्टार्ट करें n equal to 1 से, फिर n equal to -1 भी रहेगा whatever. इस चीज में अपन देख लेते हैं क्या हो रहा है इनफैक्ट. Yeah, that's right. और इसका जो है लाइक कर लेंगे ना, नो बिग डील, we'll have to do it. Just A upon n summation of 1 upon n करना है अपने को from n equal to, oh it's not just 1 upon n, it's like actually negative as well because एक इसमें पॉजिटिव है, एक इसमें नेगेटिव आ रहा है, राइट? जो पॉजिटिव है दैट्स लाइक गोइंग इन दिस डायरेक्शन. सो या इट्स लाइक नेगेटिव 1 पावर n, नो एक्चुअली काम को नेगेटिव 1 पावर n डाल ही दो बिकॉज राइट. सो अब जो पॉजिटिव वर्जन रहेगा वो दैट्स एक्चुअली गोइंग डायरेक्शन. कूल. सो ये समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, राइट? दैट्स द थिंग. अपन देखा हुआ था, या वी हैव सीन दिस एक्चुअली. So, you know, like 1 plus x square, actually not just 1 plus x, 1 minus x. चलते जाते इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x. Okay, 1 plus x इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? नेचुरल ऑफ 1 plus x इज इक्वल टू x minus x square upon 2, वो जो भी है, you get the thing. Just put 1 in there, just get 1 minus 1 upon 2 plus 1 upon 3 चलते जाओ. Which is exactly what this thing is, except कि तुमने x का फिर नेगेटिव बन डाला है. Wait, नहीं नेगेटिव नहीं. हाँ, तुमने इसको नेगेटिव किया इस पूरी चीज को, because yeah, that looks like the thing. So the natural log of 2 है but in negative version, right? आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है ऐसे भी. ओके, राइट. सो इट विल बी नेचुरल लॉग ऑफ 2, नेचुरल लॉग ऑफ 2 आ जाएगा यहाँ पे, एंड दैट्स ऑफ a ऑफ कोर्स. और फिर ये जो चीज है दैट्स एक्चुअली डूइंग इज आल्सो सपोर्टिंग दिस बिकॉज इसका जो करंट है लाइक इन दिस डायरेक्शन यहाँ पे. या एग्जैक्टली जो यहाँ पे हो रहा है वो सेम चीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, व्हिच मींस या इट्स जस्ट 4 नेचुरल लॉग ऑफ टाइम्स a. अब a को वापस डाल देते हैं, जस्ट म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई अल्फा. You get 2 natural log of 2 times mu naught I upon pi alpha naught, of course, which is not this thing for sure. It should have worked. Oh shit, मैंने यहाँ पे 2 क्यों लिखा? I have no idea. मैंने इस पे 2 क्यों लिखा? सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए था. ओके, वो 2 इसलिए क्योंकि वहां से भी आ रहा है. सो एक्चुअली में यहाँ पे 4 नहीं, सिर्फ 2 चाहिए. सो ये 2 नहीं चाहिए यहाँ पे, राइट? नेचुरल लॉग ऑफ 2 म्यू नॉट I upon pi alpha naught. So C is the answer. Next question. Next question नहीं, बस इतना काफी है. Okay. Right. So I'll see you guys in the next video. Bye.